I request everyone to please settle down quickly. The front rows are empty, and I think we all have to win this race. So we have to be this time in the front rows. And people who are coming late, it could be a penalty for them to be sitting on the front row. So I don't know how do you interpret it, but all right. Good morning, everyone. This is absolutely fantastic. एक चीज पहले बता दूं, disclaimers here that you are really sitting very close to the dais. Okay. Earlier we used to have orientation which was like this across the length. Now we are on the breadth. So all of you are visible. Probably here we can listen to your small little conversations also. So you have to be very discreet. Okay. Yes. And typically that section, it's little volatile there. The markets are not stable there. So your whispers are really coming to the end. हम लोग तो ठीक है, see we are central council members, so we have to interact, we know daily in and out. But the speakers who are coming in next, they are all high profile people. They were once here as a chartered accountant. They've become who's who today in the industry, and they are here. They'll be talking to you. You've got a director from Power Finance Corporation. You've got someone from BCG, someone from McKinsey, someone from a very very large fund house. So all of these people will be here. When they hear these small little talks, which is typically to be done in local trains, I think that will be really bothersome. So this disclaimer, please keep that in mind, that you are here talking about some of your future entities that would happen, future enterprises, future entrepreneurs that I'll see from here. Because I totally believe as a chartered accountant, it is instilled in your DNA that you are all employment creators, not employment seekers. This is a temporary phase that I see that you are here to seek an employment for all of yourself. While I was coming on the elevators, I found a group of people. I congratulated them and I said them, I just took a sigh that यार सब इतने bright minds हैं, सब employment के लिए जा रहे हैं. This guy, smartly came back and told me, sir, capital इकट्ठा करना है, फिर देखो हम क्या करते हैं. बस वही जज्बा होना चाहिए, वही जुनून होना चाहिए. उस आदमी के लिए और उस जज्बे के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जज्बा यहाँ से लेके जाएं. भले ये प्लेटफॉर्म CMIB का है, भले ये प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री का है. बहुत दर्द हुआ था मेरे को जब मैं एज ए सेंट्रल काउंसिल मेंबर पहुंचा और एक रैंकर से मिलने गया एक कंपनी में. वहाँ पर मैंने उसको पूछा कि क्या कर रहे हो, बहुत बड़ी एंटिटी है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरप्राइज ऑफ दिस कंट्री. एंड आई आस्क्ड हिम, डूड, हाउ इज योर लाइफ, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, हाउ वाज योर ऑडिट पेपर, हाउ मच डिड यू स्कोर. आंसू आ गए बेचारे के आंखों में. बट स्टिल ही सेड, सर थैंक्स टू एग्जाम कमेटी हम लोग सब ऑडिट से भी आगे निकल के आ गए. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि अगर किसी को CA बनना है तो, चूंकि अनुज सर ने कहा कि मैं पार्ट ऑफ द एग्जाम कमेटी, तो एक छोटा सा, क्योंकि आप CA बन गए तो आपको एक चीज़ बता दूँ. आप लोग के अटेम्प्ट का मुझे ध्यान है, जब हम लोग बैठे थे तो ऑडिट का जो पेपर है ना, ये मतलब ये पूरा सेक्शन इतना खाली हो जाएगा अगर वो वाकई वैसा अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो आप समझ लो. बट दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, दैट इज व्हाट वी वांट टू ब्रिंग. सिर्फ एक के लिए हम ऐसा नहीं कि सबको रोक दें. और जितने लोग 40 पे आए ना, उनको तो नारियल चढ़ाना चाहिए ICI में आके, बता रहा हूँ मैं. मतलब ये सिस्टम समझने के बाद तो मैं लिटरली इतना मेरे को रिस्पेक्ट हो गया ना. मैं ITO में जब भी जाता हूँ पहले मैं धोख दे के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को 40 आए थे ऑडिट में. So, coming to the entire, see, you all are chartered accountants now. You should know you belong to an institute which is one of the most fabulous, one of the best organizations in this country today, and I'll tell you why. We've got around 30 plus committees here. Each committee is equivalent to a ministry that you see in the parliament today. If any of you today decide to become an entrepreneur, we've got a startup committee. If any one of you decide to work with MSMEs, and let me tell you, the program that we did a nationwide program, 182 branches this organization has, and more than around 500 study circles, study chapters. These are small associations of chartered accountants in a very, very remote area. If an Amazon claims that I deliver to
Being a logistic company, being a profit organization company, earning company, if it claims it delivers to say around 70, 75, 80% of the pin codes of this country, let me tell you, ICI has reached out to almost 92% of the pin codes of this country. And it's not a joke. We are at the root level empowering students, empowering underprivileged people without any background, people without any privileges to become just like you and me, sit in one of these chairs, become a chartered accountant, become a finance advisor to one of the largest and the best minds of this country. A chartered accountant only can do that. So therefore, it can be anyone and everyone. And that is how empowering our course is. That is how empowering this institute is. So you decide to become, you decide to work, and let me tell you, there are around 3.5 crore MSMEs today in this country. More than 2.8 crore MSMEs have not yet been served by a chartered accountant yet. आप लोग यहाँ पर 2,500 लोग हो, मैं 2.8 करोड़ की बात कर रहा हूँ. मैं अगर इक्विटिवली भी डिवाइड करूँ ना, आप अपनी पूरी ज़िंदगी में उन सबको सर्व नहीं कर पाओगे. इतना काम अवेलेबल है आज मार्केट में. तो अगर आप लोग डिसाइड करो कि इफ़ यू कैन कम आउट एज एन ऑटोमेशन एजेंट्स, if you can come out as a tech company, there is a committee called as Digital Accounting Assurance Board. Now, since I am also the part of Digital Accounting Assurance Board, let me tell you about 3 things that will make you proud about this entire organization. IFRS कितने लोगों को पता है? हाँ, सुना तो है. ठीक है, आपको पता है वो सिलेबस में नहीं है, पढ़ने को नहीं है, थैंक्स टू ICI. नहीं बता रहा हूँ सही में कि every time a corporate would have made statements in IFRS which was required. अगर foreign investment आपको चाहिए, please create your balance sheets, please create your reporting framework and as per IFRS. So every time I would have done that, I would have to pay a royalty to the IFRS organization in UK. We stood up, the ICI stood up, went to the MCA and said, look, we have accounting standards. What we'll do is we'll create a framework and set up Ind AS. That Ind AS will ensure that, I don't drain my expensive currency just for the sake of reporting framework. Imagine a country which is about to become a $1 trillion economy, which is 3rd largest and 4th largest and whatever. It doesn't have its own reporting framework. We set that up. And आप लोग को एक चीज बता दूं, we not only stopped royalty, but we stopped one big thing to happen. Because every time there would have been IFRS assignment here, there would have been people from outside, from offshore, from these entities only, who are trained, would come and implement this for these large organizations because no one here actually knew about IFRS yet. Of course, we would have covered up, we would have learned, we would have done everything, but we would have first given a platform to all these people. एक accounting standard, एक reporting framework से बहुत बड़ी economy चल रही है, एक country की, एक organization की. We stopped that. ICI stood up, our entire team got up. There is an accounting assurance board. There is a CAQD department which stood up and said, we'll do the research, we'll set up, we'll benchmark. And therefore, Ind AS became an MCA, immediately patted our back and said that, yes, this is to be done. इससे क्या हुआ पता है आपको? इतना सारा तो रुक गया, but we've grown an in-house talent now. Every reporting framework. And today, I'm proud to tell you that non-corporate entities are also now supposed to report in the format that has been prescribed by the ICI and MCA. That means exclusive right of reporting framework, a standard reporting framework throughout the country. Gujarat se Guwahati, Kashmir se Kanyakumari, you will have one reporting framework, and that is an exclusive right of a chartered accountant only to audit and deliver on these reporting frameworks. Today, because of this direct tax committee, cohesively, everyone in the parliament, every decision maker has come together and once and for all settled this argument that if there is anyone who is able to attest, do an audit assurance function, become an accountant to this country, it is only one and one, that is the chartered accountants. Once and for all, this definition has been marked in the hallmark as a glory. And this will entail today. And what is a proud element, let me tell you, today we stand on the cusp of exporting
standards to 18 countries of this world. These statements are forensic accounting investigation standards, the first ever in the world that is being promulgated and promoted by the ICAI. And today India will earn royalty from sending these forensic standards to 18 countries. And you know what? इनका जब फ्रेमवर्क लगेगा, इनको जब अप्लाई करना पड़ेगा, इनका जब रेफरेंसिंग होगा, इनको जब एविडेंस देगा, इनकी जब साइट किया जाएगा, इनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जाएगा इन दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज, किसकी जरूरत पड़ेगी? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की. लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस fabulous function that the ICAI is doing. And you, this must make all of you proud. मैं एक छोटा सा चीज बताऊंगा. श्री राम जब निकले थे, राम थे, वो श्री राम बने क्योंकि सीता जी को ढूंढने निकले और रास्ते में उनको हनुमान मिले. सीता रूपी जॉब को आप ढूंढने निकले हो आज, राम से श्री राम बनना है ना, तो रास्ते में जो हनुमान मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसको साथ में मिलके गले लगाना और इंश्योर करना एक संजीवनी रूपी पहाड़ जो आप लोग खड़ा कर सको, एक ऐसा एंटिटी खड़ा कर सको, एक ऐसे एंटरप्राइज खड़ा कर सको, एक ऐसी विश्वास पैदा कर सको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो आज वैल्यू है, इज बिकॉज वी आर द फाइनेंशियल डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, नॉट बिकॉज वी आर एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंट्री. ओके, आज हमारे जितने भी फोर फादर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जिनकी वजह से आज हमको रिकग्निशन मिल रहा है, सीए की डिग्री की इतनी जो पावर है, इट्स बिकॉज दीज पीपल हैव बीन डिलीवरिंग स्टेडीली डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, आवर आफ्टर आवर एज अ financial doctor to this economy, not because they were glorious employees of any of these organizations. I'm sure you would become. I was listening to one very famous story that, you know, whenever in crisis, Israel में जब भी अटैक हुआ, people, all the technical, all the people who are well placed, all Israelis came back to this country to protect its sovereignty. हमारे साथ पता नहीं क्या है हमारे डीएनए में कि इंडियंस जहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, बड़ी जगह पे पहुँच जाते हैं, पर वो कभी वापस, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब किसी ने भी मुंह नहीं खोला, कोई नहीं आया हमारे इधर बोलने के लिए कि यार वी हैव टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री. माय फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, wherever you do, whatever you do, remember one thing: we are Indians first. Empower this country, empower this great nation, because it's what has given us this opportunity to do whatever that we are, wherever we are. हनुमान जी जहाँ भी मिले ना, उनको गले जरूर लगाना और कोशिश करना कि वहाँ से आप वापस अयोध्या लौटो और एक श्री राम, एक ऐसे किंग बन के लौटो, सिर्फ राम नहीं श्री राम बन जाओ. सो पॉइंट इज दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज है, वेरेवर यू डिसाइड, आपको एआई सीखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, a small little course of artificial intelligence today on the internet, they'll first give you 99 rupees का कोर्स, इन्वॉल्व यू, और फिर उसके बाद आपको 25,000, 50,000, लाख रुपए तक का कोर्स बेचेंगे. You are chartered accountant, my friends. AI and ICAI, we have a committee. For 3 days, we talk about more than 28 tools of AI or real live experience. 3 times meals, breakfast, lunch, high tea. बीच में जितनी चाय चाहिए वो भी. पता है कितने कॉस्ट में? पता है कितने कॉस्ट में? एक सर्टिफिकेट कोर्स है which we give to our chartered accountants and only our chartered accountants at the cost of 5,000 rupees only. That is the power of ICAI. That is what it is. It is not a profit organization. हमने लिया होगा as a student आप लोग से बहुत कुछ, but this is how we deliver it back. This is how we are delivering it back. Believe me, Tuhin Kanta Pandey ji, the SEBI chairperson, was shocked to hear when we are delivering. In 1 year, we have trained more than 35,000 chartered accountants as AI professionals today. More than 35,000. The same chairman stood up and said that we don't want engineers to do our system audits. You need chartered accountants. And we told them, there is a course called as DISA, Diploma in Information System Audits. Friends, it is unfortunate that हमारे यहाँ पर chartered accountants सब खड़े चिल्लाते रहे कि हमको जीएसटी आता है, जीएसटी आता है. जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, सबको काम मिला, सब जीएसटी का काम करने गए, पर सिस्टम ऑडिट्स की जब बात आई, कोई भी डीसा खड़ा होकर नहीं बोला कि मुझे डीसा आता है. आई एम अ केपेबल, एलिजिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर. देयरफॉर वन थिंग इज फॉर श्योर इज that we are lacking is effective communication. I'm not talking about your soft skills. You are doing excellent in the place where you are.
and I'm sure you'll have people around you who will inspire you to become a great communicator. But you need to communicate कि आपको ये आता है, you are eligible, you are entitled, and you are capable to deliver this. और नहीं हो तो ICI is there with you. Come to our committees, come to any of these. So मैंने कहा 30+ ministries हैं. There is something called as CFM committee, the capital markets, financial markets committee. If any one of you want to do something extraordinary in the capital markets, be an algo trader, develop some technology, this is the first platform that you will get. There is a research committee. How many of you have heard about a concept called as GCC, Global Capability Centers? 1 2 3 4 5 लोग. हाँ, अब थोड़े खड़े हो रहे हैं, जैसे क्वान्टिफाई हुआ खड़े हुए. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वान्टिफिकेशन माय फ्रेंड्स. आप लोग के डीएनए में है कि क्वान्टिफाई करना है, क्योंकि 40 लाना है और 50 ओवरऑल भी लाना है. क्वान्टिफाई करना तो हमको बचपन से मतलब हमारे अंदर भर भर के सिखाया गया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर यहाँ पर हम लोग फेल हो जाते हैं. आप लोग 5 लोग मिलकर जीसीसी नहीं करोगे, आप लोग में से इधर 100 लोग अगर जब मिलोगे ना, तो यू कैन हैव वन लार्ज जीसीसी फॉर दिस कंट्री सेटअप इन नो टाइम. दैट इज द पावर. और वो हमारी कमिटी है WTO कमिटी, दैट इज अवेलेबल. Any resources that you want, any investment that you want, any equity that you want to raise, any support that you want, it's all within ICI. It's all in the ICI framework. You know the kind of event. आप सोचो startup MSMEs के लिए हमने ये हॉल बुक किया जो आज आप लोग के लिए किया है, because you are a new chartered accountants, तो आप लोग के लिए तो बनता है, क्योंकि लिया है ना आपसे इतना. अब बताओ उन लोग से क्या, पर उनको भी यहीं पर ही जितेंद्र राम मांझी, दी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ MSME was here. आप सोचो वो सब ये बात कर रहे थे. This was one that I said about FAIS. Second, about AI, I told you. Third is a huge definition in the management corporate consultancy services under Companies Act, which now includes forensic. That means each one of you can, despite practicing, can also now start working as a expert, as a consultant, as in a private limited company, in terms of some areas which includes risk and forensics both. This is the first time ever forensics has been included by the MCA in the definition of subsection 2 and clause 4 of the management consultancy services that can be delivered by an accountant. In the last, before the parting words, because you know our president Nandaji has always been inspiring to us. He always tells us the story of Bhagat Singh Ji. When Bhagat Singh Ji was on his couch waiting for his डेथ सेंटेंस, जल्लाद भाग के आया उनके पास और जल्लाद ने बोला कि आपका समय आ चुका है, आधे घंटे में आपको हैंग कर दिया जाएगा. हमेशा हैंग जब होते हैं तब सूरज उगता है. इस समय 6:30 बज रहे थे शाम के, तब उनको हैंग किया जा रहा था ताकि चारों तरफ विद्रोह ना हो सके, वायलेंस ना हो और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे. शाम को आए. भगत सिंह जी ने सुनते ही, एक 23 ईयर्स ओल्ड बॉय, आप लोग की भी ऑलमोस्ट वही एज है, 23 years old boy stood up. 2 कुचाले भर के उसने जल्लाद को पकड़ा. जल्लाद डर गया कि बोला ये मुझे मारेगा. वो भागा. पीछे से भगत सिंह ने उनको गले लगाया, बोला शुक्रिया मेरे भाई. एक मौत के फरमान के लिए, मौत का फरमान लेके आने वाले शख्स के लिए, एक जल्लाद के लिए शुक्रिया. और भाई एक लाइन में आना मतलब बहुत बड़ी बात थी. बोला जब से मैंने होश संभाला है, मैंने एक ही सपना देखा है कि मैं कैसे इस देश के लिए कुछ कर मर मिटूं और कुछ कर दूं. आज मुझे वो मौका मिला है, तुम्हारे वजह से मुझे वो मौका मिला है. उन्होंने एक कलम उठाई और दीवार पे लिखा, कुछ इस तरह वाकिफ़ है मेरे जज्बातों से मेरी कलम, कुछ इस तरह वाकिफ़ है मेरे जज्बातों से मेरी कलम, इश्क लिखना चाहूँ तो भी इनकलाब लिखता हूँ. Friends, this is the time. We are growing, we are doing excellent. Each one of you are an ambassadors for this institute. Not only that, you have a role now that you will play in this financial ecosystem, but please understand you have something to give back to this country also. And whenever it comes, stay ready for that. Do give your best, and not only to this country, to all the students who are coming in next of the ICI. If you find a student, take pride in being a chartered accountant, my friends. Whichever industry you go, make sure that you help them hire as many chartered accountants as you can. Praise every chartered accountant, every student, because you know the struggle, how they've become a chartered accountant. It's not a joke that they've become a CA. Deliver करना नहीं करना एक अलग बात है बॉस. इंटेंशन सही अगर जब तक हैं तो हम वो कर सकते हैं. Last 4 acronyms that I want to deliver and leave this stage as a parting message.
This is a nest. I give you this acronym for your success. NEST, NEST. एक नेस्ट होता है ना छोटा सा घोंसला जिसके अंदर अंडे होते हैं, अंडे हैच होते हैं, उनको गर्माहट मिलती है घोंसले में, हैच होते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता है एंड दे फ्लाई ऑफ, दे टेक ऑफ फ्रॉम देयर. ये वो नेस्ट है. ICI इज दैट नेस्ट. फॉर ईच वन ऑफ यू दिस शुड बी. N इज नेटवर्किंग. बी अ गुड कम्युनिकेटर. आप लोग आजू बाजू हो, शायद नहीं जानते हो, कॉन्ग्रेचुलेट तो कर लो कि या CA बन गए हो. शायद क्या पता शायद साथ में जॉब भी करें, या क्या पता आगे जाके साथ में हम लोग नहीं फैमिली नहीं, क्या है तुम्हें यार, मतलब वो भी हो सकता है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली ऑन्टरप्रीनरशिप. आप कुछ बड़ा सेटअप कर सको, कुछ बना सको. सो N इज नेटवर्किंग. E इज ऑन्टरप्रीनरशिप. क्योंकि यहीं से ही you please sow the seeds. Do not stop yourself from becoming just an employee. आगे chartered accountant who's like the independent director of one of the large Maharatnas. Got a fabulous trainer from a leading management institute. I request all of you to please join us quickly so that we can start. We've got a long lineup already. I request all the staff of ICI to ensure let's get people back on their seats.